You can see these visuals coming on your TV screens as United Nations Secretary General Antonio Guterres, along with Prime Minister Shehbaz Sharif, is visiting the flood-affected area of Usta, محمد in Balochistan province, and earlier he was given a detailed briefing by Chief Minister Sindh Syed Murad Ali Shah and United Nations Secretary General. After the detailed briefing by the Sindh Chief Minister Syed Murad Ali Shah said that we need to stop the madness, the way we are treating nature. Now is the time to reduce emissions, and we are in complete solidarity with the people of Pakistan. And he also said that Pakistan needs massive financial support. It is not the matter of generosity, rather it is the matter of justice. And the situation for Pakistan is very unfair. Right now, these visuals coming from the flood-affected area of Usta, Muhammad in Balochistan province. United Nations Secretary General. जैसे अल्लाह की तरफ से ये चीज़ें जो हम पैदा किए हैं उसने हमारे ऊपर ये चीज़ें आई हैं और ये सख्तियाँ कौमों के ऊपर आते हैं। हमें ये चीज़ें आए हैं इंशाल्लाह। हम तैयार तो नहीं है, लेकिन ये कि हम किसी के सामने ये नहीं कहें कि हमें पैसे दे, लेकिन जो अल्लाह ने लाया और उसके ज़रूर ज़रिया किसी को बना देता है, कोई भी ज़रिया बन जाता है। हम इस चीज़ के लिए Excellency, the Chief Minister is saying that this calamity, this challenge has come by the act of the nature, by God. But this has also offered opportunities. The challenges are colossal, and we have to respond with the help of the federal government and the donor agencies abroad. हेल्प तो अल्लाह करेगा, हेल्प और ज़मीन पे जो ज़रिया बन जाए वो इनका नसीब जो बना देता है अल्लाह खुद ज़मीन। Okay, God will help, and people would like to reconstruct and rebuild themselves. I may say something. Yeah. There is only one point I disagree. Yeah. Can translate? Yeah. एक चीज़ है जो मैं उसे इत्तेफाक नहीं करता जो आपने I कहा। also believe in God. Yeah. No. But it was not God. It was the humanity. Yeah. Carbon emissions. Carbon emissions and Climate change, waging global war on warming. nature. इंसान का And किया था the nature इंसान is striking back. लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ही So it's the responsibility Is of on people. human beings. Agreed. जो नुकसान हुआ है उसका हेल्प अल्लाह करेगा, ज़रिया कोई यूएन बन सकता है। God will help, but will be- UN or the federal government or the other Be the donor vehicle countries will be helpful. through which the Excellency, this is the largest province of Pakistan in terms of geography, in terms of population. It is very large. But distances are very large and remote areas, and to reach to those areas is a very, very difficult task. Whatever infrastructure they had, it washed away. We just saw a railway bridge which was built during the times of British Raj. That's gone. And bridges, flyovers, I've seen myself touring all these areas along with the Chief Minister. It's been terrible here. And they are all trying their best. They are trying to provide shelter, food. But this province, as I say, has lots of natural resources by the grace of God, but it lacks in terms of resources, in terms of finance and other resources. Then we need to focus this province off the same very sharply. And in that, I think your interaction with the international community would be very, very helpful, because they have to travel long distances. Road is not available, communication is not available, transport is not available, and look at the flight. So I think this province also needs equal attention, if not more. So we go to the affected families in the tents.
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मतहदہ को वजीर एअज़म की जानिब से ब्रीफ किया जा रहा था। इससे कबल उनको ब्रीफ किया गया कि किस तरीके से बलूचिस्तान में होने वाले जो नुकसानात हैं उसके हवाले से सेक्रेटरी जनरल को यह बताया गया कि सूबे के 5 अजला मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं, जबकि 34 में से 32 अजला के अंदर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मतहदہ को ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि सैलाब से बलूचिस्तान का वसी रकबा मुतासर हुआ है। पुल सड़कें मुकम्मल तौर पर पानी में बह गई हैं। लोगों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरा इलाकों से निकाला गया, जबकि 9 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। इसके साथ साथ ब्रीफिंग के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को यह भी आगाह किया गया कि बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर जो सड़कें तबाह हुई हैं उनको दोबारा से बहाल करने के लिए, उनकी दोबारा से तामीर के लिए